अब्बास साहब को जानने के लिए राज कपूर साहब से मिलना बहुत ज़रूरी था। न जाने कितनी फिल्में इन दोनों लोगों ने साथ की हैं। तो अब्बास साहब का लिखना मेरे लिए सिर्फ दिमागी ही नहीं या किताबी आदर्श किस्म का लिखना ही नहीं, बल्कि उसमें बहुत सी रूहानी बातें हैं, बहुत सी बातें जो दिमाग से ज़्यादा दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। और दिल का सोचना मेरे काम के बारे में जो मैं काम करता हूँ, पहले उसका बीज अब्बास साहब के सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि उनके दिल में जा पड़ती है बात। और ये खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं किसी न किसी तरह से उनके दिल को टटोल के कहीं कोना कर लेता हूँ, वहाँ जाके बात रख देता हूँ कि साहब ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ सोचा है, और अब आप आगे बढ़ाइए। But he was the hero. He was the hero. And he said, you have also brought a father story for me. So I said, no sir, this is not father story, this is son story. You are the father and your son is your son. So this is your story and Raj Kapoor happens to be your son. Not that Raj Kapoor happens to be the hero and you are the father. So like that I persuaded him and convinced him. All over Moscow to greet the Soviet senators. Here is Avara, Pradyaga in Russian. And here is Raj Kapoor, who was soon to get the popular title of Tavarish Pradyaga, Comrade Avara. Nargis, the heroine of Avara. And Radhu Karmakar, who photographed Avara. K. Abbas, producer of Ganga and the writer of Avara. That's me, of course. Well, Bobby was a created, greatest hit. Was the greatest hit, and more than that, and that time, Bobby, as a story of teenage love, was something new for the Indian screen. Yes. And the teenage love, whether it should be allowed or not allowed, or what, all kind of controversy arose in newspapers. For a long time, it continued, and Bobby has, I think, in a way, has still remained a model for many producers to copy. Because the success of Bobby has not been repeated by any other film made on the similar lines. But it has been attempted several times. It has been done several times, with, of course, different measure of success. Sometimes the girl is rich and the boy is poor, and vice versa. मामा यानी कि अब्बास के पास कई साल तक अपनी कार नहीं थी। वो ज़्यादातर टैक्सी से चला करते थे। फिर बॉबी के सक्सेस के बाद राज कपूर जी ने उन्हें एक एम्बेसडर गिफ्ट की। खुशी तो बहुत हुई, मगर अब सवाल उठा ड्राइवर का। वो भी बड़ी मुश्किल से एक मिला, कुछ साल तक उनके साथ रहा, और फिर जब वो छोड़ गया तो वहीं के वहीं। उन दिनों मैं अपनी MS ऑफ्थल्मोलॉजी करके बम्बई लौटी थी। एक दिन उनके यहाँ आँख की तकलीफ के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाने गई तो कहने लगे, तू ड्राइविंग सीख ले तो मैं तुझे अपना शोफर बना लूँगा। पोस्ट ग्रेजुएट लेडी शोफर? मामा बहुत महंगी पड़ेगी, मैंने कहा, और वो जोर से हंस दिए। One such instance, of course, was when it must have been in the mid-70s when Abbas suffered a mild paralytic stroke, and we were all sleeping
and suddenly the doorbell started ringing at the very oddly hour, around about 1:30, and my uncle, Mr. Anwar Abbas, had to go and answer the doorbell to find out who it might be at this oddly hour. And to everyone's surprise, it was Mr. Raj Kapoor, who was standing outside and yelling on top of his voice, लोग कहते हैं कि ख्वाजा अजमेर में रहता है, लेकिन मेरा ख्वाजा यहाँ फिलोमिना लॉज में रहता है, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊँगा. And when he was escorted inside the residence, he didn't sit beside Abbas, but he sat on the floor with his legs crossed and kept begging for forgiveness that he wasn't informed of his illness, of his ill health. And then he was quite politely asked to leave. Abbas Saab said, Raj, kal mulaqat karenge. But he didn't want to leave Abbas Saab. Such was the love and respect that Raj Kapoor gave to Khwaja Ahmad Abbas. एक बात जरूर कहूंगा, अब्बास साहब सामने बैठे हूँ भले, कि मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि ऐसा रिश्ता बिटवीन अ फिल्म मेकर एंड हिज राइटर, हिज थिंकर, जो थॉट है वो ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कहाँ नहीं होते, मैटर ऑफ ओपिनियन, बट दैट्स वेरी हेल्दी. भाई तुम अपना कंसेप्ट बताओ, हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि साथ की स्क्रिप्ट बंद करके फेंक के वहां से जाओ, तुम क्या हो और आप क्या हैं और वैसा क्या है, जैसे अमूमन सुनते हैं साथ के फलाने राइटर का और फलाने डायरेक्टर का. मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से, ऑफ कोर्स ही इज प्रीऑक्यूपाइड एट द मोमेंट, दैट ही इज जस्ट नॉट अ राइटर, ही इज अ मैन ऑफ मल्टीफेरियस एक्टिविटीज. And in the literary field, he's got his novels to write, he's got his articles to write, he's got his scripts also to write, plus his own script to write and to direct and to produce. So, बड़ा मुश्किल हो जाता है. And yet I have been very, very lucky in that I can always get him for me. This is probably a long, long time affection that he has for me. अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ.